Hello guys, in this video we're gonna discuss about the previous year paper of the PhD biology that is subjective जो कि सब्जेक्ट का था पेपर तो क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव ही है और इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा जो कि कह रहा है कि the enzyme present in the Saccharomyces cerevisiae and responsible for formation of ethyl alcohol from molasses through fermentations are, fermentation is the process in anaerobic condition, absence of oxygen. Your simple carbs just break down and form ethyl alcohol. And if I'm talking about the simple carb, that means glucose, fructose, even the sucrose can be used for this process. One thing that is mentioned in these questions is molasses. Molasses are rich in the sucrose. Okay. Now, as we know, sucrose is the disaccharides that is form of two monosaccharides unit, glucose and your fructose. Sorry for the handwriting, it is hard to type with the mouse and small set of pen I have. So the disaccharides break down to the two monosaccharides unit. This process is catalyzed by the invertase enzyme. Okay. Now, as we know, these are the simple substrates for the fermentation process. This goes through the glycolysis from pyruvic acid. Okay, pyruvic acid now changes into the ethyl alcohol. Now this second reaction here is catalyzed by the James enzyme. Okay, so these two enzymes are responsible for the formation of ethyl alcohol through fermentation process. Saccharomyces cerevisiae unicellular fungus, ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, जो अपना आटा है, आटे को फुलाने के लिए, रोटी को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, जो काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बर्डिंग के थ्रू इसमें प्रोडक्शन होती है. सो ये मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, that is the pattern trigger immunity and the effector trigger immunities are associated with. These are the immunity response that is generated in case of the plants when the foreign pathogen attack to the plant cell. Just say this is the plant cell. Okay, it's a rough diagram. Okay, now pattern trigger immunity works at the cellular wall level. सेल वॉल पे जो रिस्पॉन्सेज है, जो रिकॉग्नाइज करेगा आपके पैथोजन को सेलुलर वॉल लेवल पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो रिकॉग्निशन करता है पैटर्न ट्रिगर इम्यूनिटीज, एंड जो इफेक्ट होंगे उस पैथोजन के एंट्री के इंट्रासेलुलर लेवल पे अंदर सेल के अंदर, तो उनको जो है विद हेल्प ऑफ इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटीज जो है इनिशिएट किया जाता है. डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज, लाइक वो उसके अगेंस्ट जो है प्रोटीन बना देंगे जो हेल्प करेंगे उसको, उसका जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए. सो इसका जो आंसर दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म टू काउंटर अटैक द पैथोजन इन्वेजन. सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस. थर्ड क्वेश्चन, which one of the following statement is correct for the plasmid? Plasmid, as we know, in the prokaryotic cell, there is the extra chromosomal
small DNA present, that is circular, double stranded, ओके, सेल्फ रेप्लिकेटेड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियोइड्स अलग से होता है इसमें, उसके अलावा ये अलग से है प्लाज्मिड। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दे आर द स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, दैट इज करेक्ट। दे आर सर्कुलर, दैट इज करेक्ट। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, नो, दे आर डबल स्ट्रैंडेड, so they cannot replicate independently on the chromosomal of the microorganism। ये भी स्टेटमेंट गलत है। प्लाज्मिड जो है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेते हैं क्योंकि because they have intensively used in the biotechnology processes for this purpose that the foreign DNA is introduces in the plasmid, okay। To replicate the process and to enhance the the production for the given products, इसलिए जो इसका यूज किया जाता है। सो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सो द स्टेटमेंट 1 and 2 are correct and 3 and 4 are wrong, so we will go with the answer option number 1। I hope this is okay। Fourth question is, which one of the following characters is not displayed in the mycoplasma। माइक्रोप्लाज्मा पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी में, ये एक वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है। माइक्रोप्लाज्मा, that is the PPL, pneumonia like organism, the smallest one. There is no cell wall present, okay, no cell wall। और इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इसकी वजह से होता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी शेप को एक प्लूरोमॉर्फिक शेप ये चेंज करता रहता है ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। सो इसके ऑप्शन देखेंगे, द सेल वॉल इज एब्सेंट, दैट इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन को पहले ढंग से देखें कि नॉट डिस्प्लेड पूछा गया है, तो सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म द आउटर मेम्ब्रेन, ये चीज तो इसमें है जी। पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट, ये चीज भी इसमें है क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है तो पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड डिफाइंड न्यूक्लियस, ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये चीज इसमें नहीं होती, तो वही पूछा गया कि जो चीज में नहीं है। Membrane bound organelle and definite nucleus is the characteristic feature of eukaryotic cells, so चौथा ऑप्शन डबल हेलिक्स ये तो होगा ही नहीं, so that is the right answer this। ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक बॉटनी से है, और जो इकोनॉमिक बॉटनी है वो थोड़ा फैक्चुअल बेस होती है, याद करके ही होती है। तो इसमें मैच करना है कि कौन सा प्रोडक्ट्स हमें किस चीज से मिलता है। When blastrin is extracted from the Caracanthus roseus, रबर जो है हैविया जीनस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बास्ट फाइबर का यूज पैकेजिंग के लिए होता है, तो क्रोकस स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट होता है। नटमैग जिसको कि हम जैफल बोलते हैं, उसको जो है मिरिस्टिका फ्रेगरेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो चीज़ें सारी फैक्चुअल है, याद करके होती है। देयर इज सो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और है, मैं जितने भी इनके पेपर देखे हैं अभी तक के पेपर और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसमें इन्होंने एक चीज़ की है कि अगर आप एक चीज़ को कनेक्ट कर दोगे, एक भी किसी चीज़ को नॉन को कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि ए आपने पहले ही फाइंड आउट कर दिया था, तो सीधा अगर टाइम बचाने के लिए आप ये वाला ऑप्शन के साथ जा सकते थे। Next question is, which one of the following is found to be originated in the beginning of Iron Age about 5000 year ago in the Eastern Africa। तो ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही जो है ह्यूमंस का ओरिजिन माना जाता है। ल्यूसिन कॉर्केना इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसको हम फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज द रागी।
Okay. Seventh question is, which one of the following has the largest collection of aquatic plant species in the India? It's again the factual question. Malabar Botanical Garden and the Institute of the Plant Science in the Calicut have the largest collection of the aquatic plants. दूसरा इससे ये क्वेश्चन तो अब नहीं आते हैं, जैसे कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ द पेलियो बॉटनी भी इधर ही है, लखनऊ में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपका कोलकाता में है, बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा, लल्लुआइड्स बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। Eighth question is, the medicinally important product, again from the economic botany, Google, is obtained from the Commiphora Whitgate. तो ये जो चीज़ गूगल बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इस तौर पे एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो गूगल को जो हम गम रेजिन के रूप में एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये एक गम रेजिन जो ऐसे थोड़े क्रिस्टल लाइक पीसेस होते हैं, पंसारी की शॉप पे भी मिल जाएगा ये तो, और थोड़ा शाइनी ऑरेंज कलर के होते हैं। इसका प्रयोग जो है हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी करते हैं, ड्रग्स बनते हैं इसकी हेल्प से। I hope this is clear. Now, ninth question is, which one of the following is not a primary center of crop diversity as proposed by the वेब लॉ? वेब लॉ ने जो है प्राइमरी 8 प्राइमरी सेंटर दिए थे, इनमें से क्या क्या है, जैसे एक चाइना हो गया, इंडिया हो गया, आपके साउथ अमेरिका हो गया जिसमें कि पेरू ब्राज़ील कंट्री आती है, सेंट्रल अमेरिका हो गया, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका हो गया, फिर सेंट्रल अमेरिका में आपका आता है मैक्सिको, यूएसए, ये सारी चीज़, और फिर आता है आपका यूथोपिया, मेडिटेरियन, साउथ एशिया एज वेल, साउथ एशिया, not South Asia but East Asia, sorry, East Asia, and we have कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, and we have the South America, Central America, Central Asia, Central Asia. So if we check out the option here, that China is the primary center, India is the primary center, South America is the primary center, but the South Africa is not the primary center. Primary center are, इसने एक और टर्म दी थी, secondary center, primary center. Primary center are where from where we have taken the originally found the wild variety of the crop, but another one is called the secondary center, that is called when the wild variety is cultivated for the crop purposes, for the human wellness. So that is called secondary centers. Primary center is where we found that the wild variety of the crop. In order to digest away the outside cell layer, the sperm acrosome store enzyme. Acrosome is, if you talk about the acrosome, this is the sperm head. Okay, so this portion is called the acrosome. This portion is rich in Golgi. Okay, so rich in Golgi, and to break the oocyte cell, now we have to check out the oocyte structure as well. Now there are the pieces, small pieces of outer layer that is called the corona radiata, and inside we have the zona pellucida. Okay, and
जो आपका हाइलोरोनिडेज है, that is believed to break the outer layer, that is corona radiata. Zona pellucida जो है एक proteinaceous layer है, and acrosin is the enzyme that breaks the zona pellucida. Acrosin, as we know, zin है तो protein को break करेगा. As you know, this is the proteinaceous enzyme. Just another example, we say trypsin, pepsin. These are the proteinaceous enzyme. सो ये एक्ट करेगा जोना पेलिसिडा पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. सो दिस इज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू गेट enough knowledge about the these 10 questions asked in the previous year PhD biology question paper.